Good morning, students. So, yesterday we just started with your gravitation beta. Okay. So, what is the formula we have got for the gravitation? Force is directly proportional to the product of masses. Force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance. और g की वैल्यू कितनी होती बोला था मैंने 6.67 into 10 to the power of minus 11. ठीक है ना? ठीक, चलो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी से देख लीजिए. मान के चलो we got a point mass capital M which is divided into two parts. Small m and capital M minus small m, and separated by fixed distance, such that gravitational force between them is maximum. दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? मैक्सिमम हो रहा है. Then find small m divided by capital M is equals to how much? ठीक है? See the question, everyone. The point mass of capital M is being divided into two parts, small m and capital M minus small m, and separated by a fixed distance. यानी यहाँ पर एक पार्टिकल है मास स्मॉल m और यहाँ पर हो गया कैपिटल M माइनस स्मॉल m, सेपरेटेड बाय सम फिक्स्ड डिस्टेंस, मान के चलो d. तो F max कितना बनेगा बेटा? F max will be equal to your capital G into M1 into M2 divided by दोनों की दूरी, that is nothing but d square. Okay. अब आप लोग को मालूम है if any function is maximum, its derivative must be equal to how much for me? 0. Isn't it? I'll write with other pen here right now. If any function is maximum, its derivative must be 0. ये कंडीशन है बेटा मैक्सिमम के लिए, ठीक है ना? So this is a condition for your maximum. कभी भी मैक्सिमम पूछ रहा है तो उस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन 0 करना है. तो फोर्स लिख लीजिए, कैपिटल F is equals to capital G, M1 is nothing but small m, another one is your capital M minus of your small m, and separated by distance of your some d square or x square, जो भी ले रहे हैं basically depending upon that relation, that is nothing but of your d square. अब इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए with respect to mass, that is your df divided by your dm, that must be equal to 0. Okay, so that is the differentiation of your f की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर? m into your capital M minus of your small m. वैसे भी कैपिटल G कांस्टेंट है, G square was also your constant part of relation, तो चले जाएगा वो. इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए with respect to your dm, that must be equal to 0. ठीक है? Now इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा. डिफरेंशिएशन ऑफ योर dm, इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए. See how much I am getting right now here. Differentiation of your capital M and as well as of your small m. कितना आएगा? D, this is your small m into capital M minus of your m into m, this will become for me your m square divided by your dm, that must be equal to 0, isn't it? तो इसमें से कैपिटल M कांस्टेंट है, बाहर निकालो. So this one is capital M into your dm divided by your dm minus differentiation of x square will be equal to 2 times of your x, यानी 2 times of your m. a वाला चले गया, that will be equal to 0, यानी कैपिटल M minus of your 2m will be equal to your 0.
यानी कैपिटल M is equals to 2 times of small m. So therefore small m divided by capital M will be equal to how much for me? 1/2. तो ये हो गया इन दोनों का रेशियो. डिफरेंशिएशन समझ में आया? ओके, स्मॉल m by capital M is equals to your 1/2. आया सभी को? और एक क्वेश्चन देख लीजिए बेटा. Number of identical point masses, each of mass 1 kg is placed along x-axis. ठीक है? At x is equals to 0, comma x is equals to 1, comma x is equals to 4, comma x is equals to 8, comma so on. Okay, then find net force on mass at x is equals to 0. Okay, due to remaining. मैंने कल क्लास में इसका बेसिक मैथमेटिक्स करवाया था. इन सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे लिखते हैं, वो वाला कंडीशन है. यहाँ पर देखो उसने क्या दिया हुआ है, ये मेरा एक्सेस है. यहाँ पर देख लीजिए x इज इक्वल्स टू 0, फिर उसके बाद x इज इक्वल्स टू 1, फिर उसके बाद x इज इक्वल्स टू 4, फिर उसके बाद x इज इक्वल्स टू 8. गो ऑन. वी आर कीपिंग द पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 kg, यहाँ पर 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 1 kg, like that it is going on. So this is the masses which is been kept at x is equals to 1, isn't it? And x is equals to your 2 ले लीजिए, मैं तो 1 बोले तो नहीं आएगा, you take it as a फिर x is equals to your 2, इसको 2 कर दीजिए. x is equals to your 2, ये हो गया यहाँ पर x is equals to 2. ओके, कॉमन रेशियो आ जाएगा, फिर इजी हो जाएगा. सो x is equals to your, इसको ले लीजिए आप 2, दिस विल बी इक्वल टू योर 2. तो यहाँ पर 1 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है. हियर ऑल्सो 1 kg, हियर ऑल्सो 1 kg, हियर ऑल्सो 1 kg, हियर ऑल्सो 1 kg, ऐसा रखते हुए चले गए बेसिकली. मासेस ऑफ योर m1 m2 m3, ऑल दी मासेस सेम है बेटा. तो मैं यहाँ पर फोर्स लिख सकता हूँ, यहाँ पर F इज इक्वल्स टू योर G इंटू योर m1 m2 डिवाइडेड बाई योर एक्स स्क्वायर. तो m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू है 1 kg और m2 की भी वैल्यू है 1 kg. तो m1 इंटू 1 तो वैसे भी चले जाएगा. तो F इज इक्वल्स टू, ऐसे कितने पेयर बना सकता हूँ बेटा मैं, G इंटू योर m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई योर x1 square plus G into your m2 m3 divided by your x2 square plus of your G into your m3 m4 divided by your x3 square plus ऐसा n number of particles के लिए बना सकता हूँ. m1 कितना है 1 kg, m2 कितना है 1 kg, m3 कितना है 1 kg, m4 कितना है 1 kg, पूरे 1 kg है. x1 की वैल्यू कितनी है बेटा, x1 की वैल्यू इज हाउ मच फॉर मी ओवर 0, isn't it? x1 की वैल्यू कितनी है 0 एंड x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 है कि नहीं. x is equals to 0, x is equals to your 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8. हाँ, तो x1 is equals to 0, x2 is equals to 2, x3 is equals to 4 and x4 is equals to 8. हाँ, x1 0 है ना, ये हो जाएगा 0. ठीक है, तो अब इसमें मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर G m1 m2 सब कॉमन हो जाएंगे. इट इज योर 1/0 स्क्वायर प्लस 1/x2 इज नथिंग बट 2 स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया 4 स्क्वायर प्लस 1/8 स्क्वायर प्लस सो ऑन. सो ये हो जाएगा G इंटू 1/0 इज नथिंग बट नथिंग, सो इट इज योर 1/2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 1/4 स्क्वायर विल बिकम 16 प्लस 1/8 8 जो 64 प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक जाएगा. ठीक है ना. So what is the common ratio right now for this one I can take? Common ratio is right now for me what?
1/4। तो ये फॉर्मूला मैंने बताया था कल क्लास में, एस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एस इंफिनिटी टर्म इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, इजंट इट? सो कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर? 1 हो जाएगा ना यहाँ पर, सॉरी 1 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है 4। डियर 1 डिवाइडेड बाय 0 कितना होता है बेटा? अनडिफाइंड, यानी इंफिनिटी होना चाहिए। तो आई हैव टेकन समथिंग मिस्टेक हियर, तो स्टार्ट फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 की जगह x इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करते हैं, दैट विल बी बेटर, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। सो विल स्टार्ट विद योर 1 kg। तो x1 की वैल्यू भी यहाँ पर आप 1 kg ले लीजिए, सॉरी 1 मीटर ले लीजिए, 1 kg बोल रहा हूँ, 1 मीटर। x इज इक्वल्स टू योर 1 मीटर, ये हो जाएगा 2 मीटर, ये हो गया 4 मीटर, और इसके बाद ये हो गया 8 मीटर, गो ऑन लाइक दिस। देन ये हो गया x1, x2 इज इक्वल्स टू 2, x3 इज इक्वल्स टू, ये हो गया x2, ये हो गया x3, ये हो गया x4, ये हो गया x1। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, so that will be equal to your 1। तो 1 स्क्वायर इज नथिंग बट 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास g इंटू, यहाँ पर बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसका कॉमन रेशियो हो जाएगा 1/4, तो ये बन जाएगा मेरे पास 3/4, तो ये बन जाएगा 4g/3। सो दिस विल बी द फोर्स, ठीक है क्या? क्लियर बेटा? चलो छोटा सा करेक्शन है बेटा, x इज इक्वल्स टू 0 के बजाय यू स्टार्ट फ्रॉम योर x इज इक्वल्स टू योर 1, x इज इक्वल्स टू योर 1, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 4। तो जब अपने को कॉमन रेशियो आराम से आ जाएगा तो कैलकुलेशन में ज्यादा गड़बड़ नहीं हो जाएगी। सो 1/1 हो जाएगा यहाँ पर, सो दिस विल बी इक्वल टू योर 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू योर 1। So first term will become for me 1 and common ratio will become for me 1/4. So simplified we'll get f is equals to 4g divided by your 3. Clear है? चलो next heading, gravitational field। Gravitational field, gravitational field is represented by letter I, or it is represented by letter G bar, okay। So इसको फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं बेसिकली। इसको डिफाइन कैसा करते हैं बेटा? द स्पेस अराउंड द यूनिट मास up to which its influence can be felt is called as of a gravitational field। जैसा एक मैग्नेट होता है बेटा, ए नॉर्थ पोल और ए साउथ पोल, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड्स निकलते हैं एक रीजन तक अपनी फोर्स लगाएगा, इस रीजन को हम लोग इसकी फील्ड बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह से हम लोग अगर एक यूनिट मास ले रहे हैं बेसिकली, सो आई कैन राइट द डेफिनेशन राइट नाउ हियर, द स्पेस अराउंड a mass in which its influence can be felt is called gravitational field, is called gravitational field। So what is a gravitational field beta? The space around a mass in which its influence can be felt is called your gravitational field। Is that clear? अगर इसकी इंटेंसिटी के बारे में बात करें हम लोग, intensity of
ग्रेविटेशनल फील्ड, और मान के चलो इसको हम लोग एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोला, intensity of your gravitational field or acceleration due to gravity. So देखिए बेटा, intensity is nothing but force experienced by your unit mass. Force experienced by your unit mass is called as of your intensity of gravitational field. इसको हम लोग I या G से represent कर लेते हैं. So I can write here the force experienced, the force experienced by unit mass, यानी जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1, unit mass kept at a point, kept at a point in the field, kept in the field is called intensity, is called intensity of gravitational field, intensity of gravitational field at that point. Okay, so the force experienced by unit mass kept at a point in the field is called as of your intensity of gravitational field at that point. It is represented by your I. So I is equals to force experienced by unit mass, that is nothing but m. So I is equals to your F divided by your m. So this will be the formula. So intensity is equals to your force per your unit mass. इसकी unit बता सकता है बेटा कोई? Force is measured in Newton and mass is measured in kg. Newton kg will be the unit. Okay. और इसका और एक unit भी होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, और ये जो इंटेंसिटी होती है बेटा, that is always parallel to the force. Intensity is parallel to force, gravitational force, that is F bar. Okay, तो अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए. F is equals to, we know the formula, G into m square divided by your r square. अब इंटेंसिटी निकालिए. I is equals to F G into your m square divided by r square divided by m. am और a square चले जाएगा. So this will be G into m divided by r square. So intensity का फॉर्मूला आ गया मेरे पास. I is equals to G into m divided by r square. So this is the intensity. So intensity is equals to your G into your m divided by your r square. Okay. और हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मान के चलिए ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये मेरे पास अर्थ है, ये इसका रेडियस हो गया मान के चलो कैपिटल आर. इसके ऊपर एक छोटा सा मास रखा है मैंने, मास m, और ये हो गया कैपिटल m. क्या इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा बेटा? ऑब्वियसली रहेगा. सो दिस इज F इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय दोनों की दूरी, दैट इज नथिंग बट r स्क्वायर. Isn't it? Now what will be the force acting on this body beta? Weight of this body is acting in the downward direction. तो ये हो जाएगा mg. तो force की जगह आप mg लिख लीजिए. So that is equals to capital G capital M small m divided by your r square. कुछ करते हुए दिखाई दे रहा, small m और small m कट गया, तो small g will be equal to capital G capital M divided by r square. So दोनों के फॉर्मूले one and the same होते हैं. So acceleration due to gravity बोलो या intensity बोलो, that will be one and as well as of your same. ठीक है ना? तो एक बार देख लीजिए. Intensity of gravitational field. Gravitational field is represented by IRG, the space around a unit mass or space around a mass in which its influence can be felt is called as of your gravitational field. Intensity of gravitational field बोलो या acceleration of gravity बोलो, दोनों भी one and the same होते हैं बेटा. The force experienced by your unit mass, the force experienced by your unit mass kept at a point in the field. So कौन सी फील्ड होती है बेटा? ग्रेविटेशनल फील्ड is called as of your intensity of gravitational field at that point. And इसका यूनिट है न्यूटन पर केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर. I is equals to F by m. And intensity is parallel to the field. So F is equals to G into m square divided by r square. तो intensity का फॉर्मूला बन गया मेरे पास. I is equals to G into m divided by r square. I'll send you the notes better. Don't take the tension of notes. Sir, intensity वो
that is your intensity due to the radiations. This is the intensity due to the gravitational field. Okay, chalo. I is equals to G into M divided by your R square. आज एक दिन नहीं लूंगा बेटा. I'm today only one day I'm leave. Tomorrow onwards, as usually, we'll take the class. आज I am having some work, so that is only the reason I'm taking the class today for one day. Okay. Anyhow, once again, if you need, I can go for the revision of this one fastly in the class, but make sure that you write the notes. So notes लिखने का ज़्यादा time ना waste हो अपने पास. Otherwise, it's very simple only. You can still एक बार पढ़ लोगे भी तो आराम से आ जाएगा. वैसे भी इसकी recording में मैं आपको भेज देता हूँ, तो आप लोग बोर्ड पे भी कभी टाइम मिला तो डाल के उसको एक बार सुनने की कोशिश कर लीजिए. ठीक है ना? चलो, तो अपने को ग्रेविटेशनल फील्ड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला आ गया बेटा. सो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला हो गया मेरे पास I is equals to G into M divided by R square, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हो गया G into कैपिटल M divided by your R square. ठीक है ना? चलो नेक्स्ट वन. नल पॉइंट और इसको हम लोग न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं. ठीक है, नल पॉइंट और योर न्यूट्रल पॉइंट. ओके, सो नल पॉइंट के पास क्या होता है कि बेसिक इंटेंसिटी पूरी जितनी भी बॉडीज रही ना उसकी इंटेंसिटी विल बिकम फॉर मी जीरो एट नल पॉइंट. एट नल पॉइंट इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, intensity of your gravitational field is zero. Okay, that is E net. E net भी लिखो is zero. ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा? मैं E बार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. इलेक्ट्रिसिटी में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप इसमें कर लीजिए. E net will be equal to zero, यानी E1 plus of your E2 must be equal to zero. Okay, for two forces. Okay, so that is at null point. E1 will be equal to minus of E2. अगर इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ E will be equal to मैग्नीट्यूड ऑफ your 2. ठीक है, so this will be the relation. So at your null point, E1 plus of your E2 will be equal to 0. क्लियर बेटा? नल पॉइंट के पास क्या होता है बेटा? एट द नल पॉइंट इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज बिकमिंग फॉर मी जीरो, यानी E net will become for me zero. चलो इसको थोड़ा मैथमेटिकली डिराइव कर लेते हैं. इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए. मान के चलो मेरे पास 2 पार्टिकल्स है. एक पार्टिकल है M1 and this one is separated by certain distance. मान के चलो सम R. इन दोनों के बीच में somewhere the intensity is becoming for me zero. तो मान के चलो X के पास इसकी इंटेंसिटी 0 हो गई, तो बाकी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? R minus X, isn't it? तो जब भी आप इंटेंसिटी का न्यूट्रल पॉइंट निकालोगे ना, so what you do is keep a unit mass at a point of your R. इस पॉइंट पे आप what you do, you keep a unit mass, यानी +1 की वैल्यू रख दो. ठीक है ना? तो एट नल पॉइंट इन दोनों की वजह से जो फील्ड आ रही है बेसिकली, तो कितना डायरेक्शन में आएगी बताओ? सो M1 is exerting the field on this one beta, isn't it? So this is exerting the force on this one and this is exerting the force in the opposite direction. Okay, at the null point this M1 will exert the force on the unit mass, isn't it? And this will also exert the force on this one. So unit mass is right now for me your +1. So this will exert the force on the M1 in this direction, in the negative x-axis. उसी तरह से this unit mass will exert the force on your M2 in the opposite direction. यानी दोनों के forces जो होंगे, this is your E2 and this one is right now for me E1. This will be equal and opposite. So at null point क्या हो जाएगा? So I'm writing here right now points. 2 point masses M1 and M2 are
separated by distance, मान के चलो r, okay, and m1 is lesser than m2, okay, and if x is the distance, x is the distance of null point, yani the point where the net gravitational field is becoming zero, okay, from m1, then I can say that at null point, gravitational field due to the first one must be equal to gravitational field due to the second one. The gravitational field का formula g into your m1 divided by your x square is equals to g into your m2 divided by r minus of your x whole square. ये g और ये g यहाँ पर कट गया, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो विल बी गेटिंग हियर m1 divided by your x square is equals to your m2 divided by r minus of your x whole square. So this is your formula. m1 divided by x square is equals to m2 divided by r minus of your x whole square. हाँ i से भी डिनोट कर लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी कैन इवन डिनोट बाय योर i से डिनोट करो, g से डिनोट करो या e से डिनोट करो, इट विल बी वन इन द सेम पार्ट ऑफ रिलेशन. ठीक है ना. तो अगर इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ द वन इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ द सेकंड वन, देन उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन निकलेगा, m1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय r माइनस ऑफ योर x होल स्क्वायर. ओके, तो देखो m1 पे देखो, isn't it, ये यूनिट मास है बेटा, this will get attracted towards m1 and the same way this one will also get attracted towards m2. तो दोनों अपने तरफ इस बॉडी को खींचने की कोशिश करेंगे, उसके वजह से क्या हो रहा है, द बॉडी एक पॉइंट पे आके ठहर जा रही है, क्योंकि दोनों का फोर्सेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो इसके ऊपर नल पॉइंट कब निकलेगा, अगर दोनों का फोर्स इक्वल है, यानी दोनों की जो फील्ड लग रही है इस पॉइंट मास पे अगर सेम होगी, तो दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज ऑफ योर नल पॉइंट. ठीक है ना. इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई कर दूं, स्क्वायर रूट में निकाल देके, तो ये हो जाएगा r माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाई योर x इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ योर m2 डिवाइडेड बाई m1, isn't it? तो ये बन जाएगा मेरे पास r बाई x, तो ये कितना है बेटा, r बाई x माइनस 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर m2 डिवाइडेड बाई m1. ये माइनस 1 को इधर लेके चले जाइए, सो r बाई x विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ योर m2 डिवाइडेड बाई m1, और ये बन जाएगा यहाँ पर +1. तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा, x की वैल्यू बन जाएगी r डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ योर m2 डिवाइडेड बाई m1 +1. तो ये हो गया x. सो दिस इज अ डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर द न्यूट्रल पॉइंट्स निकालने का फॉर्मूला. नल पॉइंट अगर निकाल रहे हैं फॉर द स्मॉलर मास, दिस इज x फ्रॉम वेयर बेटा, फ्रॉम योर स्मॉलर मास, फ्रॉम स्मॉलर मास, from your smaller mass, x is equals to your r divided by under root of your m2 divided by m1 +1. आ गया सभी को, is it clear? देख लीजिए. So what is a null point बेटा, the point where the net gravitational field is becoming zero, that point is called as of your neutral points, are also called as of your null points. Clear है सभी को यहाँ तक, इसमें कोई डाउट किसी को? डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको नोट्स बता देता हूँ डायरेक्टली. नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट है, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. x इज इक्वल्स टू दोनों के बीच की दूरी r डिवाइडेड बाय m2 बाय m1 +1. कहाँ से है, फ्रॉम योर स्मॉलर मास, फ्रॉम योर स्मॉलर मास. अगर लार्जर मास पूछा मतलब क्या करोगे, r माइनस एक्स कर दोगे. डायग्राम में देखो r माइनस एक्स कर दो तो फ्रॉम द लार्जर मास आ जाएगा. ठीक है ना, इज इट क्लियर?
सर फ्रॉम लार्जर मास, मैं बोला ना फ्रॉम लार्जर मास x की वैल्यू आ गई तो r माइनस एक्स कर दो, r माइनस एक्स फ्रॉम लार्जर मास करना है तो विल बी गेटिंग द आंसर, x वैल्यू निकालने के बाद r में से x वैल्यू को निकाल दो। मान के चलो r 10 है, आपको x आ गया 2, तो 10 माइनस 2 दैट मींस 8 विल बी द नल पॉइंट फ्रॉम द लार्जर मास। ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं इसमें, गेट एन आइडिया। मान के चलो वी गॉट ए प्लैनेट which has a mass 1/10 that of Earth, okay, while the radius is 1/3 that of Earth. Okay, if a person can throw a stone on Earth's surface to a height of 90 meters, then he will be able to throw the stone on that planet to a height. Okay, options given are 90 meters, 40 meters, 100 meters, 45 meters. क्वेश्चन एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो। बेसिकली पहले we got a planet of mass 1/10 times that of your Earth, while the radius is 1/3 times that of your Earth part of relation. And if a person can throw a stone on the Earth's surface to a height of 90 meters, then he will be able to throw the same stone on that planet to what height is asking. Okay, तो देखो यहाँ पर ये अर्थ है और ये हो गया प्लैनेट। The planet has a mass 1/10 times, okay, and while the radius is 1/3 times. इसको मैं और छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया अर्थ, ये हो गया प्लैनेट, ये हो गया इसका रेडियस r और ये हो गया रेडियस ऑफ योर प्लैनेट। दिस इज द मास ऑफ योर अर्थ, दिस इज द मास ऑफ योर प्लैनेट। तो आप यहाँ पर कहीं ठहर के एक बॉडी को आप ऊपर फेंक रहे हो तो इट इज गोइंग टू हाइट ऑफ योर हाउ मच बेटा, h इज इक्वल्स टू 90 मीटर तक जा रहा है। तो वही पर्सन अगर इस प्लैनेट पे ठहर के इस ऑब्जेक्ट को भेजा तो कितनी ऊपर तक जाएगा, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन। ए प्लैनेट ऑफ मास, मास ऑफ द प्लैनेट कितना है बेटा, मास ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल्स टू 1/10 टाइम्स द mass of your Earth, and radius of the planet is equals to 1/3 times the radius of the Earth. देख लीजिए एक बार, isn't it? So radius is 1/3 times. If the person can throw a stone on the Earth's surface to a height of 90 meters, then what height it will be thrown? तो अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल g कैपिटल M डिवाइडेड बाय योर r स्क्वायर हो गया, isn't it? So g तो कांस्टेंट है, तो g कैपिटल M और रेडियस पे डिपेंड करेगा, so g is directly proportional to this one. So gravitation on planet divided by gravitation on your earth will be equal to mass of your planet divided by mass of your earth. Radius is inversely proportional, तो हो गया radius of the earth divided by radius of the planet whole square. ठीक है, mass of planet is how much बेटा, 1/10 times, यानी यहाँ से अगर मैं इसको लिखूं mass of planet divided by mass of earth कितना है 1/10, radius of the earth divided by radius of the planet कितना आ जाएगा बेटा, radius of the earth इधर जाएगा तो this will become for me 3/1, so this will become for me 1/10, this is your 1/10 into this will become for me 3/1 का whole square, तो ये हो गया 3 square is 9, 9 by your 10. So g on your planet divided by g on your earth is equals to 9/10 part of relation, यानी g on planet कितना बनेगा बेटा, g on planet will be equal to how much for me, g on planet divided by g on earth is 9/10.
हाइट का फॉर्मूला क्या है, काइनेमेटिक्स से आप निकाल सकते हो, h इज इक्वल्स टू योर u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ओके, तो दोनों की वेलोसिटी सेम है बेटा, इज नॉट चेंजिंग द वेलोसिटी, ही हैज नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन, तो h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। So I can write your height on your planet divided by height on your earth will be equal to your g on your earth divided by g on your planet। तो ये कितना बन जाएगा मेरे को यहाँ पर 10/9, उसका उल्टा हो जाएगा, यानी height on your planet will be equal to 10/9 times of your height on the earth। ओके, सो हाइट ऑन द अर्थ कितना जा रहा है बेटा, इसमें प्रॉब्लम में कितना दे रखा है, इट इज 10/9 इंटू हाइट ऑन द अर्थ कितना दे रखा है, देखो प्रॉब्लम में 90 मीटर्स हाइट ऑन द अर्थ, लिख ले रहा हूँ इसको एच ई। तो हाइट ऑन द प्लैनेट कितना होता है, ये इसने पूछा किसी को, इसलिए तो ये हो जाएगा 10/9, तो यहाँ पर हो गया 90, 9 1 जा 9 10 जा 10 into 10, दिस विल बिकम फॉर मी 100 meters। So that ball will raise it to a height of your 100 meters। So third option will be the answer। ठीक है, वेरी गुड। सो प्लैनेट ऑफ मास 1/10 टाइम्स आ गया बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं था इसके अंदर, बेसिकली डायरेक्ट वन स्टेप क्वेश्चन था, यू शुड हैव बीन डन दिस वन इजीली। ठीक है, इज इट क्लियर? देखो बेटा, अगर स्मॉल जी को अगर हम लोग डेंसिटी में लिखना चाह रहे हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी in terms of density rho। अर्थ का कंडीशन देखो बेटा, स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर होता है। So that is equals to g, mass will be equal to volume into density divided by r square। So that is equals to capital G, volume will be equal to 4/3 pi into your r cube into rho divided by, ये हो गया यहाँ पर r square ये r चले गया, तो small g is equals to your 4/3 into pi into capital G into r into rho। तो ये हो गया small g का relation in terms of density and in terms of your radius। ठीक है, यानी g is directly proportional to radius and directly proportional to your density। अगर रेशियो पूछ रहा है तो g1 by your g2 will be equal to, कांस्टेंट दोनों भी चले जाएंगे, so it is r1 divided by r2 into rho1 divided by rho2। क्लियर है, इज इट क्लियर बेटा? लास्ट क्वेश्चन नहीं होता, दिस इज कॉन्सेप्ट ओनली, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। स्मॉल जी का एक्चुअल फॉर्मूला अपने पास ये होता है, हो गया बेटा, अभी मेरे को भी ज्यादा लेना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन ऑन द फोर्स स्मॉल जी, और ये हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ योर डेंसिटी। ठीक है ना, सो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वन हो जाएगा। अगर आप दोनों के रिलेशन में लिख रहे हो तो g1 by g2 इज इक्वल्स टू r1 by r2 into rho1 by rho2। सो g इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिख रहे हो तो दिस विल बी द फॉर्मूला, यू नीड टू रिमेंबर दिस वन। ओके, इसके ऊपर का प्रॉब्लम देखो, ये वाला, ठीक है बेटा।
ठीक है चलो, बस इतना काफी है। एक बार आप लोग देख लो, अगर नहीं भी हो रहा था, वीडियो रिकॉर्डिंग कर दिया मैंने इसका, तो एक बार आप लोग स्मार्ट बोर्ड पे भी डाल के एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए, और नोट्स भी कंपल्सरी लिख लीजिए, और कल की क्लास में फिर हम लोग एज यूजुअली कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है ना। चलो, जज़ाकल्लाह बेटा, थैंक यू, बाय।